Hello everyone. So today we are going to see yet another concept about modulus functions. So before starting, according to the feedback I got from my friends and colleagues, I'll be switching over to half Hindi English so that it's better for everyone to understand. Okay? ठीक है. तो हम लोग आज मॉड्यूलस फंक्शन में तीन चीजें देखेंगे. फर्स्ट इज उसकी डेफिनेशन कि किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है. सेकंड चीज देखेंगे हम लोग उसका ग्राफ कि किस तरीके से उसका ग्राफ दिखता है एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट फीचर्स. और फाइनली हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर. फाइन. ओके. तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले व्हाट वाज द नीड फॉर दिस मॉड्यूलस फंक्शन, क्यों लाया गया इसको. तो देखो, जब भी हमें किसी भी क्वांटिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होगी, बस मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, दैट इज द टाइम वी आर गोइंग टू यूज दिस मॉड्यूलस फंक्शन. फॉर एग्जांपल, दिस डिस्टेंस ऑफ दिस ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन. अब मैं नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये लाइन ऊपर है, एक्स एक्सिस के नीचे है, कहीं पे है, यहाँ पे है. I want this distance d and it should be a magnitude, right? It should be a positive quantity. अदर चीज हो सकती है किसी नंबर का स्क्वायर रूट. अब आप बोलोगे सर, स्क्वायर रूट तो नेगेटिव नंबर्स का भी आ सकता है. But we will find out how it is done and how it is found out. Okay? Yeah. So let's move on to the definition of this modulus function. Definition of modulus function. देखते हैं कि इसको डिफाइन किस तरीके से किया गया. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. मॉडुलस फंक्शन को f of x उसको रिप्रेजेंट किया जाता है with mod x. This is called as mod x and it is defined as x for x greater than 0 or equal to 0, you can say, minus x for x less than 0. ठीक है. This is the simple definition. Basically whatever we simple भाषा में mod x के अगर x mod x से बाहर आ जाए तो we are going to get only positive results. Okay, good. अब आइए. So I was talking about square root is always positive. So let's see how that is defined. So let's say we are finding out square root of x square. Okay. So square root of x square को मैं लिख सकता हूँ square root of 2 square. I am replacing x with 2. Okay. This can also be written as square root of minus 2 whole square, right? So if this square and square root gets cancelled, so this will come out as 2 is equals to minus 2. Is it possible? This is never 2, right? So there should be some mathematical problem with this. So that is the reason square root of x square is always defined as mod x. इसका result तो positive होगा. And now when we say mod x is equals to 2, x can be equal to plus or minus 2, right? So this is the way how square root is defined, and that is the reason we get positive answers. बढ़िया. ठीक है. आइए अब देखते हैं graph of this equation, graph of this function. Okay, graph of modulus function. Yes. So graph you have to understand करना बहुत important है, because you will be using graphs for solving some equations out there. ग्राफ से भी बहुत solutions निकल जाते हैं. You have to just plot the graphs of two equation and see where if they are cutting each other, तो आपको solutions मिल जाएंगे. सही है. तो ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए when you are considering IIT point of view. Okay, right. तो ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही इजी तरीका है. अब कहा गया है कि y is equals to mod x, इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें. ठीक है. तो देखते हैं कैसे डिफाइन किया गया है. y is equals to x किया है और ऑल x greater than equal to 0. सही है ना, ऊपर का डेफिनेशन ऐसी है. y is equals to माइनस होगा, x होगा, और ऑल x less than equal to less than 0. सही है. बढ़िया. तो x की ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. फॉर x greater than 0, this is nothing but y is equals to x line होगी. Okay, which is a 45-degree line starting from the origin. It should be something like this. Okay. Okay. And similarly for x less than 0, this will be y is equals to minus x. So this will be another 45-degree line. Yeah, right. Yeah, this is it. So this is my graph of y is equals to mod x. Okay, and you will also study इस point को differentiate कैसे करते हैं. You'll be studying differentiation of modulus function in the upcoming chapters. बहुत सारी चीजें, span analysis होगा and stuff.
right? Yeah, but the most important thing is you should be considering this graph. See, देखो ये graph का हर एक पूरे y results positive में आते हैं, so you can have a look, you can have a guess what is going on out there. So graphs gives you a clear idea about different dilemmas you have when while solving questions, right? बढ़िया जी. चलो आइए इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए कि हम लोग इसको यूज किस तरीके से करेंगे रियल एप्लीकेशंस में. सही. ओके. या तो स्टार्ट करेंगे विद मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम. x mod x इज इक्वल्स टू 5 तो फाइंड आउट x. सिंपल सी चीज है. x के अंदर मॉड के अंदर 5 है. मॉड के हर x के दो वैल्यूज होंगे प्लस और माइनस 5. अगर इफ x was -5 तो mod x would be minus of -5, right, which is equals to 5. Or if x was 5 then mod x would be 5, right? That's the reason ये दो आंसर्स आएंगे. बढ़िया. Let's move on to something more interesting. We have been given x square minus mod x minus 2 is equals to 0. What is x? अभी you know ये mod x को दो अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, प्लस x और माइनस x, and then only we can take common and solve this quadratic equation, right? Okay, तो कैसे सोचा? Now look at this, x square दिख रहा है मुझे. Okay, so I can exploit this x square thing to make this term out here. तो कैसे करूंगा? देखो, मैं इसको माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. माइनस मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकता हूँ. मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ. दैट इज द रीजन. तो ये पूरे एक्स एक्सिस के लिए मैं इसको ये इक्वेशन को लिख सकता हूँ. दैट इज द रीजन मैं इसको मॉड एक्स का सिंपली होल स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकता हूँ. नाउ इज द थिंग आई कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर्स एंड क्रिएट द सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सही है. तो सिंपली इसको देख लो. माइनस 2 किसका प्रोडक्ट और माइनस 1 किसका सम आ रहा है? इट इज माइनस 2 एंड 1, राइट? या तो कर लो. एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मॉड एक्स 2 मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सही है. या नाउ मॉड एक्स माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब मैंने कहा था कि आपको ग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंस और ग्राफ से कुछ ये मिलेंगे केसेस, वो यहाँ पे. तो मॉड एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे हो रहा है? इट वाज समथिंग लाइक दिस, राइट? इट वाज अबाउट, it was touching this the zero axis x axis and then it was above, right? अब देखो mod x plus 1 होगा, वो कुछ ऐसे होगा, it will never cut x axis. That means this value will never be 0. तो ये 0 कभी हो नहीं सकता. This will be 0. So mod x is equals to 2 and therefore x should be equal to plus or minus 2, right? Yeah guys, so with this you have got a little bit idea of what modulus function is. Hope we'll solve some good problems in the coming lectures. So stay tuned. Please subscribe if you liked. Yeah, thank you. Bye.